Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Honorable Prime Ministers, members of both delegations, friends from the media, good afternoon. I welcome you all to the press statements following the meeting that has just concluded between the leaders of India and Japan. May I now request Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to make his remarks to the media. Sir. Your Excellency, प्रधानमंत्री किशिदा, दोनों देशों के डेलीगेट्स, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री किशिदा और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले एक वर्ष में प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत प्रधानमंत्री किशिदा और मैं उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति और इसलिए उनकी आज उनकी यात्रा और हमारे आपसी सहयोग का महसूस किया है। मोमेंटम बनाए रखने के लिए आज उनकी यात्रा उपयोगी रहेगी। हमारे आपसी सहयोग का आज की मोमेंटम बनाए रखने के लिए एक और बहुत उपयोगी रहेगी। फ्रेंड्स, आज की हमारी मुलाकात G20 की अध्यक्षता कर रहा एक और कारण से भी और जापान G7 की भारत और इसलिए G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अपनी प्राथमिकता और जापान और G7 साथ मिलकर काम करने का और इसलिए यह उत्तम अवसर है। अपनी प्राथमिकताओं प्रधानमंत्री किशिदा पर साथ मिलकर काम करने भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में आज मैंने विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री किशिदा को हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं से बताया आवाज देना है। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना, सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। वसुधैव और इसलिए हमने ये वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में जापान स्पेशल स्ट्रेटेजी और इसलिए ग्लोबल पार्टनरशिप हमने ये पहल ली। हमारे साझा फ्रेंड्स लोकतांत्रिक भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजी और ग्लोबल पार्टनरशिप पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर लोकतांत्रिक मूल्य इस साझेदारी को मजबूत बनाना राष्ट्रीय हमारे दोनों देशों के लिए रूल ऑफ लॉ के महत्वपूर्ण है ही। इससे इस साझेदारी को पैसिफिक क्षेत्र में हमारे दोनों देशों के लिए तो समृद्धि और स्थिरता को है ही बढ़ावा मिलता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की, बढ़ावा मिलता। हमने रक्षा उपकरण हमारी बातचीत में हमने और टेक्नोलॉजी सहयोग द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और डिजिटल साझेदारी पर उपकरण विचारों का टेक्नोलॉजी सहयोग व्यापार सेमीकंडक्टर स्वास्थ्य और अन्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का सप्लाई चेन के महत्व पर भी सेमीकंडक्टर और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों पर भी भारत में हमारे बीच 5 ट्रिलियन येन यानी पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में जापानी निवेश का लक्ष्य 5 ट्रिलियन येन यह संतोष का विषय है। 3,20,000 करोड़ में अच्छी प्रगति हुई है। जापानी निवेश का लक्ष्य 2019 में हमने यह संतोष का विषय इंडिया जापान इंडस्ट्रियल में अच्छी प्रगति की स्थापना की थी। 2019 के अंतर्गत हम लॉजिस्टिक इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी। टेक्सटाइल्स इसके अंतर्गत मशीनरी हम लॉजिस्टिक जैसे
फूड प्रोसेसिंग में भारतीय इंडस्ट्री एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं। मशीनरी और स्टील जैसे इस पार्टनरशिप क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद ने हाई स्पीड रेल की सक्रियता पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे मुंबई अहमदाबाद की हाई स्पीड रेल को हम तेजी से टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं। मुझे इस बात की भी और इसके लिए हमने कि हम 2020 कनेक्टिंग हिमालयाज टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना नाम का थीम चुना है। और इसके लिए हमने फ्रेंड्स कनेक्ट प्रधानमंत्री हिमालयाज मुझे माउंट मई महीने में नाम का हिरोशिमा से मैं होने वाली फ्रेंड्स G7 आज प्रधानमंत्री किशिदा ने मुझे के लिए मई महीने में निमंत्रण दिया। हिरोशिमा से मैं होने वाली मैं उनका हृदय से G7 करता हूं। लीडर इसके कुछ महीनों बाद निमंत्रण दिया। सितंबर में G20 लीडर समिट के लिए हृदय से मुझे करता हूं। प्रधानमंत्री इसके कुछ महीनों बाद फिर से भारत सितंबर में G20 लीडर समिट के लिए हमारी बातचीत और प्रधानमंत्री का यह सिलसिला फिर से इसी प्रकार चलता रहे अवसर मिलेगा। और भारत जापान हमारी बातचीत लगातार नई ऊंचाइयों को छूते रहे इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी भारत जापान विराम देता हूं। लगातार नई ऊंचाइयों को छूते रहे इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now may I call upon Honorable Prime Minister of Japan to deliver his remarks. I am visiting India again at Hyderabad House. I'm very pleased to have had a good discussion with Prime Minister Modi once again. Also, my gratitude is expressed to I'm very pleased to have had Prime Minister Modi as well as the people of India who always extend to us warmest welcome and reception. This year, Prime Minister Modi, Japan's the presidency of G7 and India G20 and reception. This year, as the world is standing at the presidency of G7 and India G20, what role Japan and India should play? As the world is standing at the history's turning point, I wish to discuss these fully with Prime Minister Modi. What role Japan and India should play? I came to India. I wish to discuss these fully with Prime Minister Modi. At the G7 Hiroshima Summit in mind, I came to India. From the meeting of upholding international order based on the rule of law and strengthening partnership with the international community going beyond G7, including the countries of upholding international order based on the rule of law and strengthening partnership with the international community, challenges faced by including the countries from what is called the global south taken up. Challenges faced by international community will be taken with Prime Minister Modi our commitment to strongly uphold international order based on the rule of law. With Prime Minister Modi our commitment to strongly uphold international order based on the various themes in international community. Also, especially in areas of development, finance, food security, themes in international community, energy. Especially views concurred in areas of development, to have finance, cooperation food security, and climate energy. Views concurred to have close cooperation between G7 toward the successful G7 Hiroshima Summit and G20 New Delhi Summit. We will cooperate toward the successful G7 Hiroshima Summit and G20 New Delhi Summit. Hiroshima Summit. And on the spot, in this context, my invitation was immediately accepted. Prime Minister Modi to G7 Hiroshima Summit. Regarding the strengthening of our bilateral relations, my invitation was immediately accepted. Global partner, wide-ranging discussion also regarding the strengthening of our bilateral relations with India, who is our special strategic Japan-India 2+2 meeting last September. Discussion also took place. And implementing Japan-India joint fighter exercise Japan-India 2+2 in January last September were welcomed.
and as concrete Japan-India joint fighter exercise for the very first time in January this economic year, cooperation with we India, welcome which continues to grow as rapidly, concrete will not only progress. support further development of India, but also create significant economic opportunities for Japan. Will not only support further development of India, but also create significant economic opportunities for Japan. 5 trillion yen of public and private investment and financing from Japan to India steady progress is being made towards the target which Prime Minister Modi and I set in March last year. Private investment and financing from Japan to India in 5 years. And we welcome the target which Prime Minister Modi and I set in March last year. हम जो 8 मेमोर पे अभी हाल ही में एक्सटेंशन हुआ उसका भी हम स्वागत करते हैं हम जो 8 मेमोर पे अभी हाल ही में एक्सटेंशन हुआ उसका भी हम स्वागत करते हैं इस बात पर दोबारा से पुष्टि करी कि हम ऊर्जा और डिकार्बनाइजेशन पर अपने सहयोग पर काम करते रहेंगे इस बात पर दोबारा से पुष्टि करी कि हम ऊर्जा और डिकार्बनाइजेशन पर अपने सहयोग पर काम करते रहेंगे कानून एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर हुए हैं इससे हमारा सहयोग 300 बिलियन येन और हम भारत में कनेक्टिविटी को और भी बढ़ाने के लिए खासकर इससे हमारा सहयोग और भी बढ़ेगा और हम भारत में कनेक्टिविटी को और भी बढ़ाने के लिए खास तौर पर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में to promote our exchanges through tourism. I also welcome the renewal of our MOC on Japanese language exchanges through tourism. During our working lunch to follow, welcome the renewal yet another productive discussion on Japanese language on such topics as the Indo-Pacific. During our working lunch to follow, I hope to have yet another productive discussion on such topics as the Indo-Pacific regional situation. Free and open Indo-Pacific or FOIP. After our working lecture event hosted by I will announce my new plan on. It gives me a great pleasure to be able to unveil my new vision on the soil of India, which is our indispensable partner. It gives me a great pleasure to be able to unveil my new vision on the soil of India, which is our indispensable partner in India on the occasion of G20. I am looking forward to welcoming Prime Minister Modi in Hiroshima in May. I thank you. And to once again visiting India on the occasion That concludes of G20 the press statements. Thank you all for joining. Delhi Summit. I thank you. Thank you, Excellency. That concludes the press statements. Thank you all for joining. आप देख रहे थे इस वक्त ये सीधी तस्वीरें प्रेस वार्ता पीएम मोदी और पीएम किशिदा के बीच जो दोनों ही नेता के बीच विपक्षीय वार्ता हुई। आप देख रहे थे इस तरह से सीधी तस्वीरें प्रेस वार्ता पीएम मोदी और पीएम किशिदा के बीच जो दोनों ही नेता के बीच विपक्षीय वार्ता हुई। अरे वाह, फ्रेंड्स के साथ छुट्टी। हाँ ब्रो, इस बार मिस आउट नहीं करना यार। इतने में अगर मार्केट ऊपर गया और मैं नहीं तो उस मिस आउट का क्या? मगर मैं मार्केट्स, इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स सब पे रिसर्च करो और मुझे इन्वेस्ट करो। छुट्टी कैंसिल। आपको भी पैसे ने काम पर लगा रखा है। गेट ईटी मनी, जो बताएगा बेटर रिटर्न्स के लिए कब और कहां इन्वेस्ट करना है। अब आप पैसे को काम पे लगाओ। डाउनलोड ईटी मनी नाउ। To join politics at all. I mean, to me, as I said, it came as a complete surprise that the Prime Minister could even consider me. People who claim to be internationalists suddenly become super nationalist. You know, beware of such people. And I ask people, if we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. China is an exception. And it is an exception. And please notice, I said China, C-H-I-N-A. There is a phrase, war by other means. There is also, think of it, this is politics by another means. You think the timing is accidental. I mean, let me tell you one thing. I don't know if election season has started in India and Delhi or not, but for sure it has started in London and New York. Politics of India doesn't stop at its borders. Sometimes politics of India doesn't even originate in its borders. It comes from outside. Why suddenly, there's a surge of reports and, attention and views. I mean, were some of these things not happening earlier? You had to make a documentary. Many things happened in Delhi in 1984. Why didn't we see a documentary on that?
Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today, my guest is India's External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar. An illustrious career of 38 years as diplomat, Dr. Jaishankar was India's ambassador in China, the Czech Republic, USA, Singapore, and then finally, Foreign Secretary. He was picked up by Prime Minister Modi to be part of his cabinet in 2019 as External Affairs Minister. The articulate Dr. Jaishankar is my guest today. Dr. Jaishankar, thank you so much for coming to the podcast. You know, every podcast that I've done, the comment section is filled with, when are you getting Dr. Jaishankar? When are you getting Dr. Jaishankar? So today I'm really That's happy. me commenting. Okay. I don't believe one word of that. So now I'm so glad and my team is thrilled that you're here with us today. And Seriously, pleasure to be here. Thank you. So I'm going to get into the macro issues of policy matters and India's neighborhood and all in the second half of the podcast. Okay. The first half is basically a curation of all that I've been seeing on the comments section where people said, please ask Dr. Jaishankar this. So the question which most people had was that how did the transition take place from, being a bureaucrat, a career diplomat, to becoming a politician, joining Mr. Modi's cabinet? Mm-hmm. How did you make that transition? What tools did you employ? Well, I didn't make the transition. It happened. I mean, it happened because, as you know, I come from a bureaucratic family. We don't have anybody remotely in the family who's entered politics in any party at any time. It had not crossed my mind. I don't think it had crossed the mind of anybody else in my circle. And